Hello, welcome. You're watching NDTV. I'm Vedant Agarwal. Well, we are counting down to our big exclusive with the Prime Minister, and he will be in conversation with NDTV's editor-in-chief Sanjay Pugalia, from jobs to his vision for the future. The entire interview will air at 8 p.m. tomorrow, but here's a sneak peek. World's largest democracy and most historic election of India. What will be the future? In special conversation with Prime Minister Narendra Modi, only on NDTV. एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुकूल हो रहे। यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। इतना बड़ा देश आप जिसको देने जा रहे हो उसको जानते हो क्या? उसका नाम पता है क्या? उसका अनुभव का पता है? उसकी क्षमता का पता है क्या? तो ये देश की जनता देखती है। कोई पार्टी अपने नाम बताएं या न बताएं, वो तोड़ती है। और हमारा पल्ला बहुत भारी है और उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा पल्ला भारी है, हर कोई कहेगा। Curtains draw on the Phase 5 campaigning. Key contests in Amethi, Mumbai and Baramulla. Smriti Irani, Piyush Goyal and Umar Abdullah in the fray. This as campaigning ends for Phase 5. Curtains draw on Phase 5 campaigning. Smriti Irani, Piyush Goyal, Umar Abdullah in the fray. Key contests across 6 states. Kejriwal's closest aide, Bibhav Kumar, arrested. The Aam Aadmi Party says you cannot crush the party. Kejriwal's first reaction to the arrest. Meanwhile, AAP MPs and MLAs to gherav the BJP headquarters in Delhi. The capital showdown. Big guns hit the campaign road. Modi makes his campaign debut in Delhi with a Northeast Delhi roadshow and public meeting. He says 140 crore Indians are my only heir. Kejriwal's roadshow, meanwhile, in the national capital. Rahul Gandhi says our fight is to save the constitution. In the Karnataka mass rape case, hunt for Prajwal Revanna continues. An arrest warrant has been issued against rape-accused Prajwal. Meanwhile, ex-Prime Minister Deve Gowda defends his son, says he was targeted. The summer of 2024, it's too hot to handle. Red hot in Delhi as the capital records the season's hottest day. Temperatures, both minimum and maximum, several notches above normal. The Met Department issues a severe heat alert for Delhi. Our lead story this evening, well, in the Swati Maliwal Rao, Arvind Kejriwal's closest aide, Bibhav Kumar, has been arrested. In fact, he is being produced before the court as well. The Delhi police have sought a 7-day custody of Bibhav Kumar. Remember, he's Arvind Kejriwal's closest aide, and there you can see visuals of Bibhav Kumar being produced before the magistrate's court by the Delhi police. Arvind Kejriwal has now responded to this. He says that you cannot crush the Aam Aadmi Party. You can arrest as many people as you want. In fact, the Aam Aadmi Party MLAs and MPs both are said to gherav the BJP headquarters in Delhi tomorrow. Listen in to what Arvind Kejriwal had to say and the BJP chief's reaction. एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो।
एक साथ जेल में डाल दो। केजरीवाल, ये नौटंकीबाजी बंद करो। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर के अंदर आपकी महिला सांसद के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई और आज 6 दिन हो गए, तुमसे एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल रहे थे, जिसको तुम क्रांति झांसी रानी कहते थे, क्रांति की रानी कहते थे, जिसको तुम ज्वाला कहते थे, आज उसके लिए एक शब्द बोलते हो, तुम्हें शर्म आ रही है। अरविंद केजरीवाल, इधर उधर की बातें मत करो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक तुमने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? And moving now to the other big political headline, well, the countdown to phase 5 of the general elections. Well, across 8 states, key constituencies going to polls from Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra. You have big faces like Piyush Goyal, Smriti Irani, Omar Abdullah, Chirag Paswan, all in the fray. And this time, of course, the big question is, can phase 5 buck the low voter trend in the earlier phases? Our reporters are spanned across the length and breadth of the country, and they get you the key contests and the big issues. Calcutta City, Kolkata and all the surrounding areas vote in the next 2 phases, but this is also areas that are close to Kolkata. You also have seats like Barakpur, which is a fight between the incumbent MP Arjun Singh and the State Minister Partha Bhaumik, who's been fielded by the TNC. Then you have the seat of Hooghly, where actor Rachana Banerjee, who is also the host of a very, very popular television show in West Bengal, Didi Number 1, and she's of course taking on Lokit Chatterjee of the BJP, who also is someone who's actually giving a tough fight to Rachana Banerjee, given that she's been the incumbent MP. Then you have Howrah, again surrounding Kolkata. Then you have other seats like Bonga, which is very important and interesting to watch, given the fact that Shantanu Thakur, the union minister, is contesting from there. And the impact of the CAA, the Citizenship Amendment Act, is likely to be seen in great measure in this seat, because this is a Mothua dominated seat in West Bengal, and the Mothua community and the Thakurbari, which is a huge significant place for the Mothua community, is located in this Bonga seat, and Shantanu Thakur is contesting from there. Also, you have other seats going to polls as well. Arambagh also going to polls, but these are all seats that are not very far from Kolkata, and interesting contests. And after this, like I said, the slogovers of this long drawn out election for West Bengal really come in. 6 seats within Mumbai are going to vote, and also several other seats within Mumbai metropolitan region, and many other important seats such as Nasik as well going to vote. As far as Mumbai seats are concerned, yes, these are some high profile seats. Piyush Goyal contesting from Mumbai North. This is his electoral debut of sorts. Of course, from Mumbai North Central, you have Ujjwal Nikam versus Varsha Gaikwad. Ujjwal Nikam, the celebrated lawyer, contesting. Of course, there were controversies surrounding his candidature, where Congress candidates, Congress leaders hitting out at his candidature and over his work as lawyer during Kasab's trial as well. That sort of went into, sparked a lot of debates and controversies in the state of Maharashtra. Besides that, some heated contests in Kalyan as well, where Chief Minister Eknath Shinde's son Shrikant Shinde will be contesting. So this was a litmus test of sorts as far as these 13 seats are concerned, because in maximum seats there is going to be Sena versus Sena, including in 3 seats. And also, apart from the 3 seats in Mumbai, there are multiple other seats where Sena versus Sena is going to play out. So in a way, this will determine who rules the hearts and minds of people within Mumbai and Mumbai metropolitan region. Is it Thackeray or Shinde? This will also in a way determine DMC elections as well, which was under Thackeray hold for almost 2 decades, because DMC elections had not happened, had been delayed. Of course, as you said, there have been splits within NCP and Sena, which has led to all sorts of political churn, which is why we did see a lot of these campaigns and roadshows by Prime Minister Modi, Amit Shah, and several other political bigwigs within Mahayuti as well as the MVA. So it is going to be interesting, fascinating contest, as Maharashtra polls are going to end with maximum city going to polls, all the important seats going to polls. Sena versus Sena. There's BJP versus Congress also playing out in 2
important Mumbai seats as well. So yes, all the bigwigs, political bigwigs, industrial bigwigs, Bollywood bigwigs will be voting on Monday. And with that, the campaign focus is now shifting to phase 6, where Delhi, of course, will be voting as well. So now it's a capital showdown and political temperatures rising along with, the heat. And you have the bigwigs of all the parties on the campaign trail, from Prime Minister Narendra Modi making his debut with the Northeast Delhi public meeting. Also Rahul Gandhi, who hit out at the BJP over the Constitution Row, and Arvind Kejriwal also in West Delhi. Take a look. ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। भाइयों और बहनों, देखिए, अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है और यही आपके दिल की आवाज है। ये इतने पीछे पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मेरे को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सतिंदर जैन को जेल भेज दिया। कहते हैं, कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला करा, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला। मैंने कहा पैसे कहाँ हैं? वो इतनी रेड मार ली, एक चवन्नी नहीं निकली कहीं। सबके बैंक अकाउंट देख लिए, सबके लॉकर देख लिए, सबके घर में रेड मार ली, कहीं इनको 25 पैसे नहीं मिले। कहते हैं इतने करोड़। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। And moving now, Congress President Mallikarjun Kharge has hit out at the Prime Minister, saying that he is making provocative statements to polarize the election. Now, Mallikarjun Kharge was referring to the Prime Minister's bulldozer remark, saying that the Congress party does not use bulldozers. Take a look. ये जो भगवान की मंदिर जो ट्रस्ट के ओर से बनी है, अभी बनने में है, ये जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और जनता में एक रोष पैदा करके इंस्टिगेट करने का, ये तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो इंस्टिगेटिव स्पीचेस करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे, अगर कोई छोटा मोटा नेता करता तो हम मानेंगे, ये बुलडोजर लगाएंगे, वो लगाएंगे। जो चीजें हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे हैं। And with that, we'll slip into a short break, but do tune in to our special exclusive with the Prime Minister tomorrow at 8 p.m. in conversation with our Editor-in-Chief Sanjay Pugalia, from jobs to the economy to his vision for the country. World's largest democracy and most historic election of India. What will be the future? In special conversation with Prime Minister Narendra Modi, only on NDTV. एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुसार हो रहे, यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। इतना बड़ा देश आप जिसको देने जा रहे हो उसको जानते हो क्या?
उसका नाम पता है क्या, उसका अनुभव का पता है, उसकी क्षमता का पता है क्या? तो ये देश की जनता देखती है। कोई पार्टी अपने नाम बताएं या न बताएं, वो तोड़ती है। और हमारा पल्ला बहुत भारी है, और उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा पल्ला भारी है, हर कोई कहेगा। Welcome back. Now, in the Karnataka mass rape case, the hunt for Prajwal Revanna continues, though now an arrest warrant has been issued against ex-Prime Minister Deve Gowda's grandson, Prajwal Revanna. Though, of course, Deve Gowda has come out to defend his son, H.D. Revanna, saying that he was targeted. He also says that those who are involved must be held accountable. ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ದೇಶದ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವರ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತಕರಾರು, ಆದರೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೇಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And news now from Uttar Pradesh's Agra, where the Income Tax Department, after a raid at a shoe trader's house, has recovered over 30 crore rupees in cash. So, pretty dramatic visuals there from Agra. Several traders, in fact, are on the radar too as far as Agra is concerned. And remember, Agra has already voted, but still, these cash seizures in election season continue.